Hello students, let's start the next one chapter, poverty. What do you mean by poverty? Poverty means garib. Poverty implies inability to get minimum consumption requirements for life, health and efficiency. I mean to say that when a person is not able to fulfill his basic requirements in his life such as food, clothes, shelter, education and health also. तो देन इट इज नॉन एज पॉवर्टी. जब एक इंसान अपनी लाइफ में छोटी छोटी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करने के काबिल नहीं होता तो देन क्या होता है वो पॉवर्टी. देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ इट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट कि रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी. व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव पॉवर्टी? It refers to poverty of one set of people in relation to the other. अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो इट्स नथिंग मोर देन कंपैरिजन. फॉर एग्जांपल, इफ मिस्टर A had rupees 20 by himself and B had rupees 15, then Mr. B is relatively poorer than Mr. A. It means poverty across of classes, religions and countries also. अगर हम कंट्रीज के बेस पर बोलेंगे कि कंपेयर, जिसके अंदर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है. हम कंपैरिजन कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडिया इज रिलेटिवली पुअर देन यूएसए. अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज रिलेटिवली पुअर देन यूएसए. हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करके हम ये चीज बताते हैं कि कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर. Absolute poverty. Absolute poverty is that in which people are below poverty line. जिसमें एक इंसान अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करने के काबिल नहीं होता. एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? पॉवर्टी लाइन का. कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी. पॉवर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी लाइन? It refers to that line which indicates per capita average monthly expenditure required to satisfy minimum needs of household. Poverty line refers to the cut off point. ये एक ऐसा point है that divides, differentiate people of different reason as poor और non poor. इनमें भी दो कैटेगरीज आती हैं. इसमें भी दो कैटेगरी कौन कौन सी आती है? फर्स्ट ऑफ रूरल एरिया एंड सेकंड वन इज अर्बन एरिया. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर है? अगर हम लोग देखते हैं कि रूरल एरिया के लिए कंजम्पशन जो दिया गया है वो दिया है हमारी गवर्नमेंट ने 816 रुपीज पर मंथ. और अगर हम अर्बन एरिया का देखेंगे, अर्बन एरिया में होता है ₹1000 पर मंथ. इफ अ पर्सन बिलो दैट कैटेगरी देन ही इज पुअर. ठीक है, तो देन पॉवर्टी लाइन जो है इस चीज को हमें बिल्कुल कट ऑफ पॉइंट में हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इनमें कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी सच एज heavy pressure of population, high illiteracy rate, high level of unemployment, inflation spiral, inequalities of income, poor state of agriculture, low level of national product, and next one is low rate of growth, etc. First of all, heavy pressure of population means population has been rising at a rapid rate in our country. हमारी कंट्री में पॉपुलेशन डे एवरी डे क्या होता जा रहा है, बढ़ती चली जा रही है. In 1941 to 51, the growth rate of population was 1% only. While we see in terms of size, India's population was 86.6 crore in 1991 and latest now 130 crore in 2020. So, heavy pressure of population is the main reason of poverty. Next one is high illiteracy rate, means अनपढ़ होना, पढ़ाई लिखाई का ना होना. The person who studies is literate and but a person who does not study is illiterate. अनपढ़ लोग जो होते हैं ना तो वो अपना काम खुद से कर पाते हैं, ना ही उन्हें कोई काम करने के वो काबिल बन पाते हैं तरीके से. If a person is educated, then he is able to find
and do any job or do a business for himself in his life. क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपके माइंड को क्या करती है, ओवरऑल डेवलप करती है. सो फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल. नेक्स्ट वन इज हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी. बेरोजगारी, एज यू नो इंडिया इज सस्टेनिंग क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट. आप जानते हैं इंडिया में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है. सो इट इज द मेन रीजन ऑफ पॉवर्टी. क्योंकि कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है कि कोई भी गवर्नमेंट कोई भी जॉब्स कहाँ से अरेंज करेंगे. और अगर अरेंज कर भी देते हैं, इफ दे अरेंज देन वी हैव लेसन नंबर ऑफ स्किल्ड पर्सन्स. सो यू नो in our country 48.3 crore persons were employed in our country till December 2014. So it is considered the main reason of our poverty in our country. Next point is inflation spiral. Inflation spiral means महंगाई. महंगाई का बढ़ना means a situation of persistent rise in the prices. As we are seeing that the prices of goods and services are increasing in our country day by day, but income is not increasing accordingly. प्राइसेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं बट इनकम नहीं बढ़ रही है. सो इन्फ्लेशन के साथ आपकी इनकम जब कोप अप नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज अ मेन रीजन कि पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री. नेक्स्ट पॉइंट इज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम. इनकम का एक जैसा ना होना. एज यू नो इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ रिच पर्सन्स आर लेस देन द पुअर. हम लोगों की कंट्री में क्या होता है कि रिच पर्सन जो है वो बहुत ही लेस देन है कि कंपैरिजन देन पुअर. नियर अबाउट 10% ऑफ द पीपल आर देयर कि हु आर कंसिडर्ड टू बी रिच. बट होता क्या है कि इट मींस गरीब तो सिर्फ वहीं तक लिमिट होता है, लिमिटेड एक एरिया में आ जाता है कि या तो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है फुलफिल करने की, या फिर उससे कोशिश करता है. कॉन्टिन्यूअसली होता क्या है कि इन स्पाइट ऑफ टू मच इनइक्वालिटी द रिच आर बिकमिंग more rich and the poor are becoming more poorer. So next point is poor state of agriculture. As you know that most of the people are engaged in agriculture in India. अगर हम इंडिपेंडेंस डे से भी पहले की भी बात करें तो then near about 72% of persons in India were depend on the agriculture at that time. अब होता क्या है कि नाउ देयर इज अ नीड टू मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर. टिल द एग्रीकल्चर इज नॉट डेवलप्ड, जब तक हम आप लोग अपनी एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ऑल द पीपल आल्सो कांट बी डेवलप्ड. लोगों का भी डेवलपमेंट नहीं होगा. अगर हम अपने प्राइमरी सेक्टर को अवॉइड कर देते हैं तो हम लोगों का डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं है. देन नेक्स्ट वन इज low level of national product. Means कि net national product is massively low in our country, that is India. According to the UNO norms, अगर हम UNO norms की भी बात करें तो क्या होगा कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम का जो एक क्राइटेरिया है वो क्या है, इज सो massively low. किस कैटेगरी में आते हैं वो, पुअरेस्ट कैटेगरी में. So it is the main reason of the poverty. Next and the last, low rate of growth means whatever the per capita income has tended to fall, then the growth rate of GDP will also fall. अगर हम लोगों का growth criteria बिल्कुल डाउन होता चल जाएगा तो हम लोगों की जो कंट्री की ग्रोथ है, जीडीपी जो है वो भी क्या होती चलेगी, 10 to fall. यानी कि वो डिक्लाइन यानी कि डिक्रीज होती चली जाएगी. That's all and the next topic we will discuss in the next video.